समस्त को आज क्लास को स्वागत। आज आम जहाँ आलोचना करने को जाऊे सी हूँ आमर जो स्पेशल ओटीटी एग्जाम 2025 रही तार इंग्लिश पेडागोजी किसी प्रश्न जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट कर निहाती भाव चैनल टी सब्सक्राइब करनी एवं आमर टेलीग्राम चैनल रे जदि जॉइन होना डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम चैनल लिंक दि जाइए सेठू आप जॉइन करेंगे। तो चलते आरंभ करवा आज क्लास एवं आज प्रथम प्रश्न रिलायबिलिटी इज द सेम एज रिलायबिलिटी का सहित सेम कंसिस्टेंसी रिलेवेंसी रिप्रेजेंटेटिवनेस ना यूजफुलनेस। देख रिलायबिलिटी कथा बा निर्भर योग्यता बा भरोसा योग्य जोटा सेटा केते बेले आसीबो ना कंसिस्टेंसी जेते बेले आसीबो। तेणु ऑप्शन ए ओके कंसिस्टेंसी जेते बेले आसीबो सेटा प्रायतः सेम एज रिलायबिलिटी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग एन अचीवमेंट टेस्ट। से कहला अचीवमेंट टेस्ट आम जिते बड़े करने को जाऊे तार फर्स्ट स्टेप कौन डिसाइड ऑन टेस्ट लेंथ आइडेंटिफाई द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स प्रिपेयर ए टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट द आइटम टाइप्स ऑफ यूज। देख ये जदि आम कौन प्रकार भी टेस्ट करने को जाऊे प्रथम से टेस्टर लक्ष्य बा को जिनस जानापी आम टेस्ट करुचे तेणु यहाँ बेसी फोकस कर लर्निंग आउटकम्स बा एलो उपर। तेणु फास्ट स्टेप रहिबो आइडेंटिफाई द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न जावा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंटेन्स ए स्पेसिफिक डिटरमाइनर। से कहला स्पेसिफिक डिटरमाइनर कोठी यूज होइछि को स्टेटमेंट रे। America is a continent. America was discovered in 1942. America has some big industry. America's population is increasing. इथे देखो ये जो अच्छी अमेरिका has some big industries तो ये यूज होइछि हमर स्पेसिफिक डिटरमाइनर। तेणु ऑप्शन सी 3 रो सी हम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देला द स्टेटमेंट दैट टेस्ट रिलायबिलिटी इज ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन ऑफ टेस्ट वैलिडिटी। से कहला टेस्ट रिलायबिलिटी दरकार किंतु सफिशिएंट न कोथि पई ना टेस्ट वैलिडिटी पई। ता अर्थ कोन मीन्स दैट ए रिलायबल टेस्ट विल हैव ए सर्टेन डिग्री ऑफ वैलिडिटी ए वैलिड टेस्ट विल हैव सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ए रिलायबल टेस्ट मे बी कंप्लीटली इनवैलिड एंड ए वैलिड टेस्ट कंप्लीटली अनरिलायबल। नन ऑफ दिस ए भीतर कौन सी नुहे। तो ये जो करेक्ट आंसर आसो सी हम ऑप्शन बी ए वैलिड टेस्ट विल हैव सर्टेन डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। से कहला वैलिड टेस्ट जो हम से निर्दिष्ट भाव में किसी रिलायबिलिटी रहिबो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्राइटेरियन रिफरेंस्ड इंटरप्रिटेशन। से कहला कार गोटे एग्जांपल या भीतर अच्छी जोटा कि क्राइटेरिया रिफरेंस इंटरप्रिटेशन कथा कही। लीना अर्न द हाईएस्ट स्कोर इन साइंस। अमिता कंप्लीटेड हिज एक्सपेरिमेंट फास्टर दैन हिज क्लासमेट। गौरव्स टेस्ट स्कोर वाज हायर दैन 50% ऑफ द क्लास। एलिना सेट अप फॉर लैबोरेटरी इक्विपमेंट इन द 5 मिनिट्स। ताहले क्राइटेरियन रिफरेंस इंटरप्रिटेशन रो एग्जांपल कोटा हबो क्वेश्चन नंबर 5 ये हम डी एलिना सेटअप फॉर लैबोरेटरी इक्विपमेंट इन 5 मिनिट्स। ठीक अच्छे। नेक्स्ट जी 6 नंबर क्वेश्चन को 6 नंबर देला व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टू हैपन टू द रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोर्स फॉर ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट वेयर द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर ईच आइटम इज चेंज फ्रॉम 3 to 4। सी कहला जे रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोर्स फॉर ए मल्टीपल चॉइस टेस्ट ताले ये कौ टेस्ट होची ना एमसीक्यू टेस्ट होची वेयर द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव फॉर ईच आइटम 3 to 4 रखाई ताले एटा इट विल इंक्रीज देची ना इट विल डिक्रीज देची ना इट विल स्टे इन द सेम ना देयर इज नो बेसिस फॉर मेकिंग ए प्रेडिक्शन ये भाया देची। तो यार आंसर कौन आसीबो एटा हम इट विल इंक्रीज। ओके ऑप्शन बी आसीबो। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम्स इज प्रॉपर्ली स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस।
सी कहला या भितर को लर्निंग आउटकमटा प्रॉपर्ली स्टेटेड अच्छी क्या नहीं कि स्टूडेंट्स मानकर परफॉर्मेंस को नहीं कि डेवलप एन एप्रिसिएशन ऑफ द इंपोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द टेस्ट स्पेसिफिकेशन लर्नर्स हाउ टू राइट गुड टेस्ट आइटम्स रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ द वैलिडिटी स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस को लेकि आमर कोटा प्रॉपर्ली स्टेटेड है जोटा लर्निंग आउटकम को दर्शाऊँगी 7 नंबर यहाँ हम एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ टेस्ट स्पेसिफिकेशन 7 रो बी आसीबो करेक्ट आंसर 8 नंबर देला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स इज मोस्ट डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिवली ए कॉन्सेप्ट एन एप्लीकेशन एन एप्रिसिएशन नॉन ऑफ द अबव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स इज मोस्ट डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन नंबर 8 तो 8 रो जो करेक्ट आंसर आसीबो एन एप्रिसिएशन सी आसीबो यार करेक्ट आंसर नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द टेस्ट इज द टीचर प्राइमरीली टॉकिंग अबाउट को टेस्ट विषय रे टीचर माने प्राइमरीली हमरो कथावार्ता करदी कोटा डायग्नोस्टिक टेस्ट प्री टेस्ट फॉर्मेटिव टेस्ट और समेटिव टेस्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 जोटा हबो सी होची हमरो समेटिव टेस्ट ओके समेटिव टेस्ट हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट देला 10 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग propositions is most essential to the final conclusion ପାଇଁ କୋଉଟା essential effective self evaluation does not require the use of test place students in rank order only test scores are influenced by the factor other than achievement students do not go to school to take test ताले कोटा फाइनल कंक्लूजन कथा से कहिछि मोस्ट एसेंशियल तो येटा हबो ऑप्शन ए इफेक्टिव सेल्फ इवैल्यूएशन डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ टेस्ट जदि से सेल्फ इवैल्यूएशन करि परछि ठीक भाबरे ताहले टेस्ट रो किछि आवश्यकता नाही नेक्स्ट देखबा क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन रो टैक्सोनॉमी रे कोटा गोटे कैटेगरी रीजनिंग एबिलिटी रोट लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग नॉन ऑफ द अबव तो 11 रो जो आंसर आसीबो या भितर कोटा भी नुह देन 12 नंबर व्हाट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल इन द टैक्सोनॉमी ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन से कहछि सबटु कॉम्प्लेक्स लेवल कोटा नॉलेज इवैल्यूएशन सिंथेसिस कॉम्प्रिहेंशन द कॉम्प्लेक्स लेवल जदि हम देखिया जिबा सेटा होछि लास्ट इवैल्यूएशन होछि मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल क्वेश्चन नंबर 13 देला देयर आर डैश लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग इज स्पेसिफिक बाय ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो दिया है सेतरे केतरा लेवल अछि बोल से पचारि छी एटा हम जानि छी सी ऑप्शन सी 6टा लेवल अछि ओके 13 द सी हबो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 14 नंबर मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन बी यूज्ड टू मोटिवेट स्टूडेंट हेल्प डेवलप इन द स्कोप एंड सीक्वेंस ऑफ टीचिंग assess the effectiveness of learning activities all the above देखो एठी से कोन कहला मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन बी यूज्ड मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को कोन पे यूज करा होची स्टूडेंट्स मोटिवेट करिया पई ठीक अछि हेल्प स्टूडेंट टू स्कोप एंड सीक्वेंस टीचिंग ये भी ठीक अछि assess the effectiveness of learning activity ये भी ठीक अछि ताले आंसर कोन हो आंसर हो ऑल द अबव ओके आंसर आसीबो ऑल द अबव तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो देला एथरे देछि सम ऑफ द स्किल्स इन्वॉल्वड इन इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग असेसमेंट रिजल्ट आर किछि स्किल इन्वॉल्व करछि कोथरे इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग असेसमेंट तार रिजल्ट कोन हबो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इवैल्यूएशन एक्सप्लेनिंग परसेंटाइल रैंक्स एंड स्टैंडर्ड स्कोर administrating computer based test describing the purpose of the evaluation तो 15 रो करेक्ट आंसर आसीबो बी एक्सप्लेनिंग परसेंटाइल रैंक केते रहिबो आ स्टैंडर्ड स्कोर केते एटा जानिबा पय हमरो ए इन्वॉल्व जो इंटरप्रेटिंग और रिपोर्टिंग करा जाय असेसमेंट ठीक अछि तो आशा करूची 15 टी क्वेश्चन समस्त क्लियर हो जाइतबे यदि क्लियर हो जाइछंती वीडियो को लाइक करंतु एवं यदि ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करनांती
सब्सक्राइब कर नियंतु। आपण मान सहित देखा नेक्स्ट क्लास रे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।